Hello बच्चों, so let's read the question. The question says match the following and choose the correct option. First column में दिया हुआ है Pioneer Community, Climax Community, Serial Community and Sears. And second column में दिया हुआ है also known as Transitional Community, has maximum diversity, the initial biotic community that invade and develops in a bare area, the entire sequence of communities that successively change in a given area. So the key concept for this question is ecological succession. Ecological succession is basically the gradual and fairly predictive change in the species composition of a given area. इकोलॉजिकल कम्युनिटी में सीयर बोला जाता है या प्लूरल में इट इज कॉल्ड सीयर्स. It is basically the sequence of communities or the entire sequence of communities that replace one another in a given area during ecological succession. Ecological succession में there is a climax community. Climax community वो होता है which is basically a stable and mature community. It is a stable and mature community that is near equilibrium. ये बेसिकली नियर इक्विलिब्रियम पे होता है ये कम्युनिटी in the environment, and it represents basically the final stage of ecological succession. ये final stage होता है ecological succession का. Pioneer species होता है first. Pioneer community या pioneer species जो होता है, it is basically the first species to colonize the area. Yeah, to colonize the barren or disturbed area, and इसका main काम होता है to basically initiate ecological succession. मोरओवर एक सीयर में जो कम्युनिटीज होते हैं उनको सीरियल कम्युनिटीज बोला जाता है. सीरियल कम्युनिटी इज बेसिकली द इंडिविजुअल कम्युनिटीज और द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज that occur in a sequence during the succession that occur in a sequence. तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के सीक्वेंस में जितने भी कम्युनिटीज आते हैं, इंडिविजुअल कम्युनिटीज को सीरियल कम्युनिटीज बोला जाता है एंड पूरे सक्सेशन को बोला जाता है सीयर. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में पूछा है कि क्वेश्चन में मैच करना है. सबसे पहला है पाइनियर कम्युनिटी. पाइनियर कम्युनिटी इज बेसिकली द इनिशियल बायोटिक कम्युनिटी दैट इन्वेड एंड डेवलप्स इन अ बेयर एरिया. सो ए का हो गया 3. सेकेंड इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी. क्लाइमैक्स कम्युनिटी में बेसिकली मैक्सिमम डाइवर्सिटी इसीलिए होती है क्योंकि इट इज द मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी. इट इज द मोस्ट स्टेबल एंड द फाइनल कम्युनिटी इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन. तो बी का हो गया 2.
देन देयर इज सीरियल कम्युनिटी। सीरियल कम्युनिटी बोला जाता है दी ऑल्सो नोन एज दी ट्रांजिशनल कम्युनिटी। जितने भी कम्युनिटीज होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबको सीरियल कम्युनिटीज बोला जाता है, तो सी का हो गया 1। एंड सीयर जो होता है इट इज द एंटायर सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिटीज, सो डी का हो गया 4। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।